अगर आपको यूपीएससी में टॉप रैंक लानी है तो आपको इथिक्स पेपर में टॉप मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट ईयर के टॉपर्स के मार्कशीट देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वहां पे उन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है। किसी ने 120, किसी ने 125, किसी ने 135 स्कोर किया है। ऑलराइट, इफ यू वांट टू एक्सेल इन दिस इथिक्स पेपर देन यू हैव टू एक्सेल इन केस स्टडीज। ऑलराइट, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू राइट केस स्टडीज फॉर इथिक्स पेपर। अगर केस स्टडीज लिखनी है तो एक बेसिक टेम्पलेट को हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बाकी आंसर्स हम लिखते हैं वैसे ही इथिक्स में भी आपको एक इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन के साथ आपको लिखना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना होता है कि पहले आपको यू नीड टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट। तो जो भी केस स्टडी दी है आपको लिखने के लिए, तो वहां पे उसका एक कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो फॉर एग्जांपल कुछ केस स्टडीज जो करंट के इवेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोलकाता में जो रेप एंड मर्डर केस हुआ है एक रेसिडेंट डॉक्टर का, तो उसके ऊपर भी एक केस स्टडी बन सकती है यूपीएससी के एग्जाम में, तो उसका रेफरेंस देना। देन सम डेटा फैक्ट्स वगैरह भी हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर अगर कोई केस स्टडी है या फिर किसी एजुकेशनल बैकवर्डनेस के ऊपर केस स्टडी है, देन दोज डेटा कैन बी पुट इन द इंट्रोडक्शन। देन कमिटी का रेफरेंस भी हम लिख सकते हैं। ऑलराइट, जैसे अभी सेक्सुअल हरासमेंट का केस है या फिर जैसे रेप एंड मर्डर का केस है, तो जस्टिस वर्मा कमिटी जो 2013 में अपॉइंट की गई थी, उनका भी रेफरेंस या उनकी जो फाइंडिंग्स है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस और समराइजिंग द केस। ऑलराइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिलेवेंट आर्टिकल्स होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं या फिर डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज या प्रीएम्बल का कुछ पार्ट हो सकता है जो रिलेवेंट है केस में, तो उसको हम यहाँ पे ब्रिंग आउट करके वन टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे डिटेल में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं। देन बॉडी में आपको दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मतलब जिसमें आपको इवेल्युएशन एंड ऑप्शंस पूछे जाते हैं, ऑप्शंस पूछे जाएंगे, उसका आपको इवेल्युएशन लिखना होता है। एंड देन सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक अदर जीएस पेपर, ठीक है। बाकी के जो जीएस पेपर्स है उनकी तरह ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो दोनों को कैसे किस तरीके से लिखना है वो भी हम अभी इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। देन कंक्लूजन में आपको बाकी के जो आंसर्स है, बाकी के जीएस के जो आंसर्स है, कुछ सिमिलरिटीज यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे आपको जो बेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस देने होते हैं उसमें आपको बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे लिखना है। जब आप बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लिखोगे तो उसका जस्टिफिकेशन व्हाई दैट ऑप्शन इज बेस्ट, ये आपको वहां पे रीजनिंग देने की जरूरत है। एंड देन एक लास्ट वाला पार्ट रहेगा क्लोजर का, जहां पे आपको एक पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक नोट पे जो भी इशू दिया जाता है केस स्टडी में, तो उसको एक ब्रॉडर लेवल पे, एट सोसाइटल, एट नेशनल, एट इंटरनेशनल लेवल पे उसको एड्रेस करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो लेट्स सी इन डिटेल। तो ये 2023 का इथिक्स का पेपर है, जिसमें मैंने दो क्वेश्चंस आपको दिए हैं। एक क्वेश्चन में आपको पहले पूछा है व्हाट आर द इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस। आप इस वीडियो को पॉज करके पूरी केस पढ़ सकते हो। एंड देन सेकंड क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया। तो यहाँ पे ऑप्शंस पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व एंड देन ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी बेस्ड ऑन द अबव केस स्टडी डिस्कस द इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। इथिकल इश्यूज कॉमन है दोनों में। सेकंड इज discuss the pros and cons of using social media by you to put across the facts to counter the fake propaganda against your family। ऑलराइट, तो ये जैसे बाकी का जीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसी तरह यहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछा गया है। ऑलराइट, तो इसे दो टाइप्स के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं केस स्टडीज में, ठीक है। अभी जब हम केस स्टडी लिखने जा रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको जो केस स्टडी है वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द गिवन केस प्रॉपरली। ऑलराइट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग इज यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द मेन इशू गिवन इन द केस। ऑलराइट, सो क्या होता है कि एक इशू के ऊपर एक केस स्टडी पूछी जाती है, देन सराउंडिंग इश्यूज भी वहां पे दिए जाते हैं। ऑलराइट, सो फाइंड आउट द व्हाट इज अ सेंट्रल इशू और कोर टॉपिक गिवन इन द केस। ऑलराइट, लाइक फॉर एग्जांपल दैट टॉपिक कैन बी करप्शन। ऑलराइट, देन दैट कैन बी टॉपिक कैन बी corporate fraud, maybe there could be this dilemma of development versus environmental conservation and so on। ऑलराइट, सो ये मेन टॉपिक कौन सा है ये आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। ऑलराइट, बिकॉज आपकी जो केस स्टडी है उसका जो सब्सटेंस रहेगा, उसकी जो थीम रहेगी वो इस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपने जो बाकी के जो इश्यूज है उसके ऊपर आपने अगर कंटेंट लिखना शुरू किया तो देन आपका आंसर इट विल गो अवे फ्रॉम द सेंट्रल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज you should also be able to find out the other issues involved in the
केस। ऑलराइट, सो एक इशू है तो उसके सराउंडिंग कुछ और इश्यूज होते हैं, जैसे एक करप्शन होता है, ठीक है, तो करप्शन में बाकी का जो नेक्सस है, जैसे कुछ कॉर्पोरेट्स भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऑलराइट, और इस करप्शन की वजह से किसी की लाइफ, ऑलराइट, किसी की लाइफ भी इन डेंजर हो सकती है, या फिर किसी का फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जो इश्यूज हैं तो वो भी आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है, क्योंकि आपको जब अब सॉल्यूशन दोगे तो आपको सारे इश्यूज को आपको एड्रेस करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, और आपका जो कंक्लूजन होगा। ऑलराइट, दिस दे शुड ऑलवेज एड्रेस द मेन इशू। जो मेन इशू है उसको वो एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर कॉर्पोरेट फ्रॉड की बात हो रही है तो आपको कॉर्पोरेट फ्रॉड के ऊपर इंट्रोडक्शन करना जरूरी है। ऑलराइट, एंड इवन व्हेन आप जब आप इसको क्लोज करोगे, जब आप क्लोज करोगे तब भी आपको इस ब्रॉडर लेवल पे, कॉर्पोरेट फ्रॉड ब्रॉडर लेवल पे आपको इसके ऊपर क्लोज करना है आंसर। ये देखेंगे हम अभी डिटेल में केस स्टडी का एक एग्जांपल लेके। देन प्रायोरिटाइज एड्रेसिंग ऑफ मेन इशू इन आंसर। इसका मतलब है कि जब आप आंसर को लिख रहे हो तब आपको जो मेन इश्यूज है, मेन इशू जो है जो केस स्टडी में दिया हुआ है उसको प्रायोरिटी के साथ लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो बाकी के जो इश्यूज है आपने वो पहले लिखे और जो मेन इशू है बाद में लिखा, देन इट विल रिफ्लेक्ट इनएबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द मेन टॉपिक, इनएबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द मेन इशू, कोर इशू। ऑलराइट, देन जो केस स्टडी है वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि आप उसको 15 से 16 मिनट में लिख पाओ, ठीक है। तो टोटल आपको 6 केस स्टडीज लिखनी है और आपके पास टोटल टाइम होगा 6 केस स्टडीज है तो 90 मिनट्स के टाइम में आपको केस स्टडीज लिखनी है, तो अराउंड 15 टू 16 मिनट्स के टाइम पीरियड में आपको ये लिखना होगा, ठीक है। तो टोटल थ्योरी के जो क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है थ्योरी के, और केस स्टडी के 6 क्वेश्चन है। तो थ्योरी 13 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स और 6 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स। ऑलराइट, तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। अब जब हम केस स्टडीज लिखने जाते हैं तो वहां पे कुछ चीजें आपको ध्यान में देनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बहुत सारे, जैसे अभी डिस्कस किया था मैंने इंट्रोडक्शन में कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का रेफरेंस यहाँ पे देना है, ठीक है। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो प्रीएम्बल से लेके फंडामेंटल ड्यूटीज तक सारे आर्टिकल्स आपको रटने की जरूरत है, ठीक है। आपको नंबर, जो आर्टिकल नंबर है उसके साथ उसके अंदर जो सब्सटेंस है प्लस उसके जो सब आर्टिकल्स है वो भी आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बस आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन में अगर आपको लोगों को बीट करना है तो यही दिस इज द ओनली वे, ठीक है। देन जो एनवायरमेंट के अंदर जो टॉपिक्स है या एनवायरमेंट के अंदर जो ब्रॉडर लेवल पे जो टॉपिक्स हम लर्न करते हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो गया या क्लाइमेट चेंज हो गया या ओशन एसिडिफिकेशन हो गया, तो पोल्यूशन हो गया, तो ये जो टॉपिक्स है ये आपको बस एक ऊपर लेवल से आपको ये पता होनी चाहिए, एक आइडिया होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, एंड देन उसके सॉल्यूशंस क्या है, एंड देन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव इसमें क्या है, ठीक है। सिमिलरली एट द सोसाइटल लेवल या सोसाइटी से कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि वुमेन क्या, जेंडर इनजस्टिस है या वुमेन एम्पावरमेंट, एंड देन सोशल एम्पावरमेंट, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये जो काफी फेवरेट टॉपिक है, सेंट्रल टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट के, वो आपको पता होने की जरूरत है, ठीक है। ये अगर ब्रॉडर लेवल पे आपको पता है देन द रिलेवेंट कंटेंट कैन बी फेच्ड फ्रॉम these सब्जेक्ट्स एंड कैन बी यूटिलाइज्ड इन आवर आंसर्स। ऑलराइट, तो अभी हम जो एक्चुअल केस स्टडी है उसे कैसे सॉल्व करना है ये हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं। तो ये केस स्टडी है, आप इस वीडियो को पॉज करके पूरी केस स्टडी यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप कोई भी केस स्टडी सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको उस केस स्टडी को पहले फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड द इश्यूज गिवन इन द केस। ऑलराइट, सो लेट्स रीड दिस केस स्टडी। प्रिया इज अ senior manager in a leading IT firm. All right, name is Priya and she is a senior manager in a leading IT firm. She is known for her uprightness, dedication and hard work. All right, one day she is working late to finalize a critical project for an important client. Her colleagues have already left the office for the weekend and the office is almost deserted. At 8:30 p.m. her supervisor Mr. Rajan sends her message requesting her presence in his office to discuss a new project initiative. All right, now see, during the meeting Mr. Rajan makes several inappropriate comments. All right, this is an issue about Priya's appearance and subtly suggests that her career advancement could be expedited if she agrees to socialize with him outside the work.
all right, outside the work, implying a quid pro quo scenario, all right. Priya is taken aback and feels deeply uncomfortable by Mr. Rajan's behavior. She realizes that his comments and suggestions are not only unprofessional but also constitute sexual harassment, all right. Priya is also aware that she has worked diligently to build her career and has a track record of strong performance. However, Mr. Rajan's position of authority and the implied threat of professional repercussions if she does not comply create a complex dilemma, all right. So now you must be able to understand that the central issue or core issue or main issue given in the case study is nothing but sexual harassment, all right. UPSC has already asked 2 or 3 times case study on this central topic, all right. So sexual harassment at workplace is the core topic, all right. So recently there have been many instances of this kind of incidents, all right. So there might be a case study this year or might be next year. So what are other issues that we are going to find out? See, discuss the ethical issues involved in the case. This is first question. Second question is, what are the options available for Priya? Evaluate each of them, all right. And third one is, what suggestions would you suggest to mitigate such working conditions, all right. So there are these 3 questions based on the given case study, all right. So if you haven't understood the case study, you can pause the video and again read it. So now let's discuss the solution for this case study, all right. So हमने देखा था कि हम इंट्रोडक्शन अलग अलग टाइप से कर सकते हैं. So first type of introduction is introduction with the example, all right. तो ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की केस है, तो इसको हम जो रिसेंट केस हुआ था कोलकाता में, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस ऑफ अ रेसिडेंट डॉक्टर, तो वो हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं, ठीक है. Underscores the severe impact of unsafe and hostile work environments on women's lives, dignity and freedom, which is directly contravening the fundamental rights under Article 14, 19 and 21 of the Indian Constitution, all right. And the given case similarly involves the critical issue. The given case similarly involves critical issue of sexual harassment, highlighting the urgent need for stringent measures to ensure safe and respectful workplace for women, all right. So what I'm doing here, first I'm trying to give a reference to the current event, all right, current event. So ये करंट इवेंट पे यूपीएससी ने इसके पहले भी बहुत बार केस स्टडीज पूछी है, ठीक है. तो उन करंट इवेंट्स का, करंट एग्जांपल्स का रेफरेंस देना इज इंपॉर्टेंट इन केस स्टडीज. इसके बाद आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट इट विद द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ कहीं पे कनेक्ट हो सकता है क्या, ठीक है. तो जैसे प्रीएम्बल से लेके फंडामेंटल ड्यूटीज तक स्कैन करने की कहीं पे कनेक्टेड है क्या. तो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द फंडामेंटल राइट्स. देन सेकेंड पार्ट जो है इस इंट्रोडक्शन का, आई एम इंटरलिंकिंग दिस इंट्रोडक्शन, दिस रेफरेंस विद द गिवन केस, ठीक है. तो गिवन केस सिमिलरली, तो ये इंटरलिंकेज है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है. तो ओनली ब्रिंगिंग आउट द एग्जांपल, ओनली ब्रिंगिंग आउट द कॉन्स्टिट्यूशनल articles is not going to suffice. You have to interlink your introduction with the given case. Now see, there is this second type of introduction, that is introduction with data. I'm quoting the data of National Crime Records Bureau 2022 report reveals a 28% rise in workplace sexual harassment cases in India, all right. This data underscores urgent need to address unsafe work environment, a concern mirror in the given case of sexual harassment involving Priya and her supervisor. So this introduction has 2 parts. First part, I am giving the reference of the data, relevant data, and in second part I am interlinking it with the given case, all right. Next type of introduction है प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस, ठीक है. तो कोई भी इशू होगा, कोई भी टॉपिक होगा जिसके ऊपर केस स्टडी पूछी जाती है, तो देखना है कि यहाँ पे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ वो कनेक्ट हो सकता है क्या, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने ऑलरेडी कनेक्ट किया है आर्टिकल्स 14, 15 एंड 19, 21 के साथ, ऑल राइट. तो यहाँ पे भी क्या करना है, द क्रिटिकल इशू ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस एज हाईलाइटेड इन द गिवन केस
this is interlinking with the given case. All right, reflects broader concerns about women's safety, dignity at work. Such situations violate the principles of equality, freedom and dignity as enshrined in articles 14, 15 and 21 of the Indian Constitution. All right, so this is how you have to bring out the constitutional articles in your answer. This is how you have to bring out the constitutional provisions in your introduction. Now there is a fourth type of introduction, which is with summarization. All right, summarization. You can just summarize the given case. All right, so see how I'm doing this. So in this case, Priya, a senior manager, faces sexual harassment from her supervisor, Mr. Rajan, who implies career advancement in exchange for personal favors. This situation reflects a severe breach of ethical standards and violates fundamental rights under Article 14, 15 and 21, which guarantees a dignified life. All right, so this is how I'm trying to incorporate important keywords. All right, so important keywords and relevant even constitutional articles can also be quoted in this type of introduction. All right, now let's move further. So let's say I'm starting with this introduction. This is my introduction. Then after introduction, I need to write stakeholders. All right. So आप अपने आंसर में भी ये stakeholders आपको लिखना होगा. तो ये यहाँ इस केस स्टडी में Priya is a stakeholder who is a victim. Then Rajan supervisor who is a culprit. Then IT firm and then society at large. So these four key, stakeholders I have brought in our introduction. Then I'm writing a transitionary line or a connecting line. All right, so through this connecting line I'm trying to establish a link between introduction and my main answer or main body. So see what I have written. The unprofessional and immoral behavior of Rajan towards Priya involves many ethical issues as follows. All right, so this question had demanded what are the ethical issues involved in the case. So that is the reason I am giving this sort of interlinkage. Now I will just give the subheading. I will either underscore it or I will just put a box around it. So one by one I am just bringing out the ethical issues. So first ethical issue is, and which is the core topic, that is sexual harassment at workplace, which violates the POSH Act 2013, Prevention of Sexual Harassment Act 2013, and also the Vishaka guidelines given by the Supreme Court. All right, Vishaka guidelines given by the Supreme Court. So remember, while writing ethical issues, you see whether that particular issue can be connected with a relevant law. All right, here this act is relevant, here this Vishaka guidelines are relevant, so I am just putting them here. All right, then next ethical issue is misuse of authority and abuse of power and unprofessional behavior from Rajan. This is an ethical issue. Then third ethical issue is lack of gender friendly work culture. So this is the reason there is absence of gender friendly work culture, because of which this sort of cases or this sort of incidents happens in our society. Showcasing absence of corporate ethics. Now I am trying to connect it with the dimensions of ethics, which ethical aspect are absent here. So I am connecting with the corporate ethics. Now fourth ethical issue is ethical dilemma in front of Priya. Ethical dilemma in front of Priya, whether to seek justice or whether to ensure her job or whether ensure her career. All right, so this is an ethical dilemma in front of Priya. All right, now next ethical issue is it breaches the right to profession under Article 19(1)(g). It is a fundamental right. All right, Article 19 comes under fundamental right, so it is definitely breaching the right to profession given under Article 19(1)(g). Then this sort of acts also violates constitutional morality and duty as given under Article 51(a)(e), that is renouncing the derogatory practices against the women's dignity. All right, so this is part of fundamental duty. So I am just trying to bring out the issues. All right, so I am trying to interlink with the relevant laws. I am trying to interlink with the relevant constitutional provisions, constitutional values, morality. All right, now see, after bringing out the ethical issues, now again I am making a transition. All right, this is a transitionary line. So next question asks what are the options available for Priya. So this transition line is after understanding the ethical issues at play,
it's important to consider possible options Priya has. All right, carefully weighing the benefits and drawbacks of each to determine the best course of action. All right, so in this case it is not explicitly asked what best course of action could be for Priya. Even if it is not asked, you have to provide or you have to write the best course of action. All right, so remember this point. In some questions UPSC might explicitly ask what is the best course of action, and in some questions UPSC might not ask. It is your duty to write the best course of action. So before arriving at the best course of action, you have to explore what options are available there. All right, and then you need to evaluate these options, and based on this evaluation, after examination of the pros and cons of each option, you have to arrive at the best possible option. And this is the logical way of decision making, and you have to showcase this power or this ability of you to the examiner that I am arriving at any decision based on logical analysis. All right, so this shows right problem solving approach, right problem solving attitude to the examiner. Now see, there are various options available in front of Priya. Now see, there are various options available for Priya. First option is staying silent on the issue. All right, this is one option. Obviously this option is not desirable, but yes, it is an option, and many girls, many women opt for this. There is underreporting of the sexual harassment at workplaces. This is a government report given by the NCRB. All right, so staying silent is an option. Now see, what are the merits of this option? This option will ensure security of her career. Then there is no personal threat. All right, no any further repercussions for or hardships for her family. So these other merits can be written. Then what are its demerits? Justice for her is not served. All right, justice for her is not served. Then it shows lack of courage and lack of fortitude. This also sets a wrong precedent in the company. All right, and this also goes against the Kantian deontological ethics. All right, so how I'm bringing out this evaluation? I'm trying to connect it with the issues given in the case, that is Priya must get the justice. All right, this is an issue. There have been this issue of sexual harassment. Now justice should be served. Whether this justice is being served or not through this option, no, it is not being served. Whether if the question is on corruption, let's say, whether the problem of corruption is being solved or not, whether the guilty or the culprits have been brought to justice or not. This is one aspect of generating points. Then second is I'm trying to connect it with the different aspects of ethics, different aspects of values, different aspects of ethical dimensions. All right, like for example here we have Kantian deontological ethics. All right, even here I'm connecting with the values, human values, courage and fortitude. All right, so this is how you have to generate points for merits and demerits. All right, more in-depth and more detailed discussion is done in our classes, regular classes. So if you want to learn ethics, if you want to learn case studies, you can join our ethics module. All right, now see, the second option available for Priya is switching the job. All right, now switching the job has merits like it escapes from the misbehavior of Rajan. There will not be any possible misbehavior in future. Second is financial security of Priya is ensured, it is intact. But this option has certain demerits, like for example it reflects cowardly and escapist attitude of Priya. Further, it may also lead to crisis of conscience for Priya. All right, because justice is not served to Priya. All right, she is showcasing cowardly behavior, she is showcasing escapist behavior through this option. That is the reason it may lead to crisis of conscience. All right, so justice is still unserved. Justice is still unserved through this option. Now next available option is making a formal complaint with internal complaints committee. This internal complaints committee, this has been provided under POSH Act. All right, and reporting the incident to the higher management. So this sort of option Priya can adopt. It suits, it seems more better, more ethical, and it is in tune with the legal standards as well as ethical standards. So now what are its merits? It ensures structured investigation and appropriate disciplinary action against the Rajan. Then Priya may get support from senior management as well. Apart from that, this option also sets a right precedent and deterrence. All right, so that
nobody in future could dare to do such acts. All right. Now, what are some demerits? Demerits are, well, it may invite retaliation. All right. So if Priya files a case, then it may invite retaliation from Rajan. Then there could be emotional and mental stress for Priya, because this will be a time consuming process. There might be retaliation, so there will be a emotional and mental stress for Priya. All right. Now, after discussing various options and their merits and demerits, now I must suggest what is the best course of action, or what is the best possible option that Priya must adopt. Now see, Priya must adopt option 3, as it aligns with legal and ethical standards and ensures justice for her and helps in creating safe and healthy work culture. So I am providing a solution here that Priya must adopt option 3. I am not giving detailed best course of action in this question because it is not the demand of the question. All right. Even if it is not asked, I'm just writing it. And then I'm giving a brief justification because it is again not asked in the question. All right. Then let's address the third part. That is, what are the suggestions to ensure gender friendly environment in the companies? All right. How to ensure a healthy work culture. So these are some suggestions, like for example, implementing strict anti-harassment policies in the company, then providing training and awareness programs on sexual harassment. Then we can also include value education and ethical training of the employees and all the stakeholders involved on various values like gender justice, gender equality and fairness. Then we can do gender sensitization of all stakeholders. Then we must strengthen the internal complaints committee established under POSH Act. Then counseling and encouraging women to report the cases. Then implement confidential reporting mechanism. Now see, this is an innovative measure, implementing confidential reporting mechanism, ensuring privacy. All right, so that more and more women will come forward and they will not face retaliation, they will not face any hardships because of the reporting of the cases. All right. And then last one is establishing counseling and support services to the victims. So this is how we have to address the sub questions of the case study. This is much like the GS answers. All right. Now last part is closure. You have to close your case study on some positive note, and as I said, you have to close it at a more broader level. All right. So addressing workplace sexual harassment requires nationwide enforcement of stringent policies, awareness programs and a cultural shift to ensure safety, dignity and equal opportunities for women across India. So this is how I am closing my case study on sexual harassment. All right. So thank you for watching, and if you want to watch more such videos, subscribe to the channel. And if you want to learn more about ethics, you can join our ethics module. Thank you.